Welcome to Inside News. This is Checking. Let's get into the details. SANJAY RAUT, a key leader from the UDDHAV THACKERAY faction of Shiv held a press conference to address various political issues surrounding the party and Maharashtra's current political landscape. During the briefing, RAUT spoke about the ongoing power struggle within the state, the actions of rival factions, and the future of the Shiv Sena and UDDHAV THACKERAY's leadership. He criticized the decisions made by the opposing factions, including the handling of key political matters, and reaffirmed his commitment to the values and principles upheld by UDDHAV THACKERAY. RAUT also discussed the party's strategy for upcoming elections and emphasized the importance of unity within the Shiv Sena, aiming to strengthen its position in Maharashtra's politics. अध्यक्षी मशाल ही संजय राऊत साहेबांच्या हातातच शोभत दिसते. या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मशाली चाललेल्या आहेत. केसरीनाथ पाटील आमचे त्यांचं क्रिएशन आहे. बोला या नरेश कुठे आहे? या बोला बोला काय म्हणताय? वारंवार तक्रार केल्या नक्कीच बऱ्याच गोष्टी करून घेतल्या. बेकायदेशीर पोलीस महासंचालक सरकार बेकायदेशीर आहे. त्याच्यामुळे अनेक नेमणुका सुद्धा त्यांनी बेकायदेशीर पद्धतीने करून घेतल्या. ज्या अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल आहे, जो अधिकारी निलंबित आहे, ज्या अधिकाऱ्याने विरोधकांचे फोन टॅप केले, बेकायदेशीरपणे ऐकले, जो अधिकारी तुरुंगात जाण्याच्या तयारीमध्ये होता, सरकार बदलताच त्या अधिकाऱ्यावरचे गुन्हे काढून त्यांना थेट राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाची बक्षीस देण्यात आली आणि त्यांच्याकडून अनेक गैरकृत्य राजकीय करून घेतली. म्हणजे अशी व्यक्ती भारतीय जनता पक्षाच्या किती जवळची असावी आणि अशा व्यक्तीच्या हातात महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या निवडणुकांची सूत्र असू नयेत, हे आम्ही वारंवार सांगत होतो. अखेर पापाचा घडा भरला आणि निवडणूक आयोगालाच लाज वाटली असा. हे जर फार काळ प्रकरण टिकवलं, महाराष्ट्र मोठं राज्य आहे आणि त्या पदावर कोणाला बसवावं हे जर भान गृहमंत्र्यांना नसेल तर ते गृहमंत्र्यांना प्रशासन कळत नाही, राज्य व्यवस्था कळत नाही आणि नैतिकता कळत नाही. आम्ही निवडणूक आयोगाचे आभारी आहोत. उशीर का होईना त्यांनी शहाणपणाचा निर्णय घेतला. पण फक्त आता आम्हाला चिंता एवढीच आहे, जसं आपण म्हणतो पंत गेले आणि या सुनील राऊत या छान मशाल आहे. लाईट अध्यक्षी मशाल ही संजय राऊत साहेबांच्या हातातच शोभत दिसते. या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मशाली चाललेल्या आहेत. केसरीनाथ पाटील आमचे त्यांचं क्रिएशन आहे. बोला या नरेश कुठे आहे? या बोला बोला काय म्हणताय? वारंवार तक्रार केल्या होत्या रश्मी शुक्ला यांच्या संदर्भात. अखेर त्यांची गटचर्ची झाली आहे. निवडणूक आयोगाने उशीर झाला असं वाटतं. नक्कीच बऱ्याच गोष्टी करून घेतल्या. CM Hemant Biswa Sharma reacted to the issue involving delayed takeoff of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's helicopter on noting the seriousness of the matter. The Jharkhand Mukti Morcha chairman, the party to which Soren belongs, wrote a letter to President Draupadi Murmu seeking her intervention regarding the incident, which they claim was part of a conspiracy to prevent Soren from attending important events. Meanwhile, Congress leader Ghulam Ahmad Mir made a statement supporting the concerns raised by chairman, while Jharkhand CM Hemant Soren himself alleged that the delay was intentional and politically motivated. In response, Prime Minister Narendra Modi remarked on the issue, stressing the need for political leaders to focus on governance, not get involved in unnecessary controversies. The entire situation sparked political debate over the intentions behind the delay and the safety of political leaders.
का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो सुरक्षा का अनुसार उनका कुछ व्यवस्था किया जाता है और जो एयर ट्रैफिक है आधा घंटा के लिए इसको ब्लॉक किया जाता है। ये नियम सबको मालूम है, तो इसीलिए जब भी जैसे हमारा असम में भी अगर प्रधानमंत्री का चुनाव का कार्यक्रम होगा कोई दिन, हम लोग दूसरा जगह में वो दिन कार्यक्रम करता हूँ। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो सुबह नहीं होता है, सीएम ऑफिस में भी आते हैं, सब जानते हैं, और उसी तरफ सारे लोग अपना अपना शेड्यूल बना लेते हैं। ये बाद में अगर प्रधानमंत्री का सुरक्षा का विषय भी हेमंत सोरेन जी राजनीति का विषय बनाना चाहते हैं, तो आप मानकर चलिए वो कितना नर्वस हो चुका है। इसलिए लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री आया होगा, वो समय तो हेमंत सोरेन जी ने या जेएमएम ने तो ये नहीं बताए थे। आगे का 2019 में भी ये हुए थे, तब भी ये कंप्लेन नहीं किए थे। 2014 में भी प्रधानमंत्री आए होंगे, तब भी ये कंप्लेन नहीं किया होगा। आज कंप्लेन करने का कारण एक ही है, वो जान चुका है कि अभी वो हारने वाला है, कोई उपाय नहीं है उनका सामने, तो इसीलिए ये काम कोई बहाना ईवीएम जैसा कुछ बहाना बनाने का वो कोशिश कर रहे हैं। सर, गुलाम अहमद मीर जो प्रभारी है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि हर चुनाव के समय एक जुमला होता है बीजेपी की तरफ से, जैसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन था और अब यहाँ पे यूसीसी की बात कर रहे हैं। देखिए, यूसीसी जुमला कहाँ, ये तो उत्तराखंड में हो ही चुका है। तो मीर जी ज्यादा समय होटल का अंदर ही है, तो उनको बाहर का खबर नहीं मिल रहा है। तो उनको एक बार गूगल करके देखना चाहिए कि उत्तराखंड में यूसीसी देश में हो ही गया है, बीजेपी शासित प्रदेश में। तो बहुत ज्यादातर समय चुनाव का समय वो होटल का अंदर में ही है। का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो सुरक्षा का अनुसार उनका कुछ व्यवस्था किया जाता है और जो एयर ट्रैफिक है आधा घंटा के लिए इसको ब्लॉक किया जाता है। ये नियम सबको मालूम है, तो इसीलिए जब भी जैसे हमारा असम में भी अगर प्रधानमंत्री का चुनाव का कार्यक्रम होगा कोई दिन, हम लोग On day one of Jammu and Kashmir Assembly session, Abdul Rahim Raut, the Speaker of the Assembly, chaired the proceedings. The session began with key discussions and formalities as legislators gathered to address important issues affecting the region. The atmosphere was marked by routine procedures such as oath-taking for new members, introduction of bills and speeches. Abdul Rahim Raut played a central role in ensuring the smooth conduct of the session, maintaining order and facilitating discussions among the lawmakers. The visuals inside the assembly showcased an active and engaged legislative environment as various members participated in the debates. Comment इवरा जैसा कि आपको मालूम है कि हम 6 साल के लंबे वर्षे के बाद यहाँ पर मिल रहे हैं। इस दौरान कुछ नामवर सियासी शख्सियतें इंतकाल कर गई हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, मैं इस हाउस में काफी देर से रहा हूं, इतनी लंबी लिस्ट मैंने कभी भी नहीं देखी ऑब्जर्वरी रेफरेंस के लिए। 57 ऐसे नाम हैं जो नाम आप तक पहुंच गए होंगे, और कन्वेंशन ये होता था कि स्पीकर साहब खुद 2-4 बातें कहते थे उनके बारे में, जिनके बारे में ऑब्जर्वरी रेफरेंस कहाँ होता था लिस्ट ऑफ बिजनेस में। आज पॉसिबल नहीं है 57 लोगों के बारे में कोई बात करना। हालांकि एक से एक बढ़कर ये ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कौम के लिए निछावर की, खिदमत खलक में अपना बेशतर हिस्सा अपनी जिंदगी का उन्होंने सर्व किया है। मुश्किल है सबको उनके बारे में बात करना, और शायद आपके लिए भी मुश्किल होगा कि आप उन पर बात करेंगे। मेरे ख्याल में
हम महदूद रखेंगे इस डिस्कशन को, बहुत ही महदूद रखना पड़ेगा। और फाइनली हम 2 मिनट की खामोशी यहाँ पर करेंगे, उनके लिए हम दुआ मांगेंगे यहाँ पे। अब सारी फिर से इसमें जिन्होंने कौमी लेवल पर काम किया है, जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, प्रणब मुखर्जी जैसे लोग, सोमनाथ चटर्जी हैं, जिन्होंने छाप छोड़ी है, भाई तारिगामी, जनाब सुरजीत सिंह सलातिया। ऑनरेबल मेंबर, जैसा कि आपको मालूम है कि हम Ajay Bhutoria, member of the National Finance Committee for Kamala Harris campaign during the 2020 US presidential election, has been actively involved in supporting Democratic candidates as the 2024 US presidential election approaches. Bhutoria continues to be a key figure in fundraising and strategy, particularly in mobilizing Indian American voters and other diverse communities. He emphasizes the importance of addressing critical issues such as economic recovery, healthcare and climate change, and social justice in the upcoming election. Bhutoria believes that a strong and inclusive campaign can help secure another victory for the Democratic Party, building on a progress made during the previous administration. His efforts highlight the growing influence of immigrant communities in US politics and their role in shaping the outcome of future elections. And this is a historic night, and tomorrow will be a historic day where the country gets to choose the first Indian American, the first black woman, and the first woman commander-in-chief of our country, and for a new way forward to create economic opportunities. So please make sure that you get out and vote, and you call every friend and family member and everybody you know to make sure you get out and vote, especially in the battleground states in Arizona, Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Michigan, North Carolina. Please make sure you call everybody you know to get out and vote for Harris and Vaz. And for my South Asian friends, please, this is a chance to make a history to elect the first Indian American Vice President of the United States. So please do not fall into the trap of misleading statements made by Trump. Please make sure you vote. She will be the best for economy, immigration, healthcare, innovation, you name it, and she will work hard for. And she only had one client throughout her life, to be the people, and that's what she's going to work for. So please make sure get out of the vote, and we'll celebrate tomorrow, and we are going to win. Thank you. Our Vice President Harris will be speaking in some short time, and this is a historic night, and tomorrow will be a historic day where the country gets to choose the first Indian American, the first black woman, and the first woman commander-in-chief of our country, and for a new way forward to create economic opportunities. So please make sure that you get out and vote, and you call every friend and family member and everyone. Ahead of the Maharashtra elections, Milind Deora, the Shiv Sena candidate from Bolli, engaged with local residents during his morning walk in Mumbai and spoke about Maharashtra's significant role in Prime Minister Modi's vision to make India a $5 trillion economy, emphasizing that the state is expected to contribute 20% to this goal. Deora also highlighted the state's government's efforts to enhance Mumbai's infrastructure to attract more investors and create job opportunities. He mentioned that the people of South Mumbai had a strong relationship with him and that they were eager to see India move forward. He added that improving Mumbai's infrastructure was crucial for economic growth and for attracting investment to the city. Especially to come to request. अभी इधर से खड़ा रहो, But very gutsy decision. Yeah, okay, all right. तो बोले उधर जाए तो बिल्कुल क्यों? दो झंडे होते थे ना तो अभी ये पूरा कोस्टल रोड जो है ना, ये पूरा गार्डन यहाँ से लेकर मलबार हिल तक 180 एकर्स लक्षात असू द्या. हा 20 तारीखला 9. देखिए, साउथ मुंबई जो है, यहाँ वर्ली सीफेस से लेकर मरीन ड्राइव तक, ये हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है. हम साउथ मुंबई में रहते हैं. साउथ मुंबई की जो समस्या है अच्छी तरह से हम समझते हैं. कई बार दक्षिण मुंबई के मतदाताओं का मुझे प्रतिनिधित्व करने का
अवसर मिला है। मेरे स्वर्गीय पिताजी इस क्षेत्र के MP रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, कॉरपोरेटर रह चुके हैं और साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई के नागरिकों के साथ नौजवानों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक एक पारिवारिक संबंध है और उनकी जो समस्या है उन समस्या को की जानकारी लेना, सुलझाने की कोशिश करना, ये हम हमेशा पिछले 5 दशकों से करते आ रहे हैं, चाहे हम सत्ता में हो चाहे हम सत्ता में ना हो। सो दिस रिलेशनशिप ट्रांसेंड्स पॉलिटिक्स, आई वुड से। एंड टुडे लोग क्या चाहते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आगे बढ़े। भारत को यदि हम, भारत की अर्थव्यवस्था को यदि After dismissing Rishabh Pant, Ajay Patel expressed a strong sense of confidence in the team's ability to win from that point onward. He highlighted how defeating India on their home ground was a huge achievement, but completing a whitewash, winning all matches, felt even more extraordinary. The player also mentioned how much he enjoys playing in Mumbai, describing the city as feeling like home to him. He praised the pitch for being in great condition, allowing him to make the most of the opportunity and perform well. Overall, the players shared a sense of pride in both the victory and the conditions that helped him succeed. Fly back to New Zealand this evening, and 6 players will be heading on to Sri Lanka for the White Ball Series. We've got a few on this morning, so we're just going to limit it to a couple of questions each, and I'll just move through individually, one by one, and we aim to be wrapped up in the next 15 to 20 minutes. I'll record the conversation and send it out to you individually as well. So we'll get started. Recording in progress. Akash, do you want to kick us off? Yeah, sure. Hey, hi, Ajaz. Good morning. Congrats on making history. This is Akash from cricket.com. So I have just a couple of questions for you. So could you just talk about the influence Rangana Herath has had on this side, both in terms of batting and bowling? My second question to you is, from Sri Lanka to here, what has changed for the Black Caps? And could you just talk a little about the technical changes in terms of the bowling for spinners, and how different were you guys from the Indian spinners? I guess firstly, Rangan has been awesome to have around the group. Obviously, he's got a wealth of experience in the subcontinent, and his record kind of speaks for itself, really, in terms of left arm spin bowling. So, I mean, for me, it was great to have him because we're quite similar, I guess, in terms of the style of bowling that we both bowl. But I think the biggest thing was he gave us a really good idea around the kind of fields to set in terms of Asian conditions and still be attacking, but also at the same time have our options to limit the boundaries as well. Because when you come to the subcontinent, it is sometimes about boundaries, and if you can limit that, you can restrict those, and then you force hard ones that can kind of bring about different challenges for batters. So different ideas, I guess, in terms of how to set fields, but also just knowing the conditions and how to I guess make the most of them. Also, I guess the second question, for me personally, it's sorry, can we go back to the second question again? Yeah, sorry. So from Sri Lanka to here, what has changed for New Zealand? And could you just talk about some technical changes? Because Santner said he worked with Herath on some pace changes and variations. So could you just talk about that and how different?
Sanjay Mathur, the Director General of International Solar Alliance, hosted the third edition of high-level conference on new technologies for clean energy. During the event, Mathur emphasized the importance of advancing clean energy technologies to address global energy challenges and promote sustainability. He highlighted how the conference provided a platform for leaders, experts and innovators to discuss and share breakthroughs in clean energy, aiming to accelerate the transition to renewable energy sources. Mathur also stressed the need for collaboration between countries and sectors to achieve a sustainable and low-carbon future, underlining the ISA's role in supporting global efforts to combat climate change. The conference aimed to showcase cutting-edge technologies and foster partnerships to accelerate the adoption of clean energy worldwide. Ladies and gentlemen, please help me welcome Dr. Sanjay Mathur, Director General, International Solar Alliance. Honorable Minister for New and Renewable Energy, Mr. Prahlad Joshi, Honorable Minister of State for New and Renewable Energy and Power, Mr. Yeshwant Nayak, the Secretary of the Ministry of New and Renewable Energy, Mr. Prashant Kumar Singh, the Country Director of the Asian Development Bank, Ms. Mia Oka, the President of the International Solar Society, Ms. Victoria Martin, who is joining us online. You see her on the screen. Ladies and gentlemen, it's such a pleasure to welcome you to the third edition of the high-level conference for new technologies in clean energy transition, which, as the MC said, is being held on the sidelines of the 7th Assembly, which was held here yesterday. This event is very timely because in a week, the world leaders will be meeting at COP29 in Baku to discuss two of our guiding goals that we decided at Dubai last year, which is tripling the energy efficiency goal and doubling the energy efficiency, tripling the renewable energy goal and doubling the energy efficiency goal. These form the basis of our interventions and can be built on the foundations of the efficient and clean technology policies that we have carried out till now. In 2023, an estimated 96% of the new installed utility-scale PV capacity and onshore wind generation capacity had lower cost than any other fuels, but only when the sun was shining and the wind was blowing. This has made it essential for us, particularly in countries where the energy demand is increasing, to look at both renewable energy at the times when the sun is shining and the wind is blowing, as well as storage technologies for the times when it is not. This underscores the need for strong alliances of technology innovators. On the first day of the Chhat Puja, known as Nahaye Kaaye, devotees in Patliputra gathered at the Chhat Ghat to take a holy dip in the river as a part of the ritual. This day marks the beginning of the 4-day festival dedicated to the sun god, and devotees take a bath into the river to purify themselves, followed by preparing special offerings for the sun god, including the traditional tekwa, a sweet snack. Nahaye Kaaye is a day of cleanliness and preparation where families come together to perform rituals with devotion and gratitude for the blessings of nature and the sun. The atmosphere is filled with religious fervor as people participate in the puja with a great enthusiasm.
विश्वास नहीं रखते। अब क्या करें, हमारी मजबूरी है तो करते ही हैं। और साफ सफाई कभी होती नहीं। हर साल सरकार कहेगी मैं पक्का घाट बनाऊंगा, और घाट कभी बनता नहीं है। सफाई तो होती नहीं है, घाट कहाँ से बनेगा। यूपी बिहार वाले हैं तो सोचते हैं यूपी बिहार वाले करेंगे क्या, पागल समझते हैं यहाँ के। अभी पानी में रहते हैं डुबकी लिए तो अरे बहुत तेज बदबू आ रही है इसमें, बहुत परेशान है हम लोग। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? अब परेशानी तो है ही है भैया, अब मजबूरी है कि हम लोग नहाते हैं। वो घाट जो अंदर बना है, मैं कहा कि उसमें नहा लूं तो कर, अभी अभी आज नहीं नहाना है, वो छठ के दिन नहाना है। बताओ कुछ एक बात जो आप उनको सरकार को बोलना चाहिए। अब क्या सरकार को बोलें, सरकार तो वही है कि वोट लेने के लिए तो घर पे आ जाएंगे, दे दो दे दो, जीत जाने के बाद पब्लिक को तरफ देखते ही नहीं है। क्या है? मेरा नाम बिट्टू है। जैसे आप देख रहे हैं अभी आपने पानी में डुबकी लिया है, जब नशा सर इतना गंदा हो गया, इतना पोल्यूशन है, तो क्या बोलेंगे, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? भैया दिक्कत तो बहुत है, अब क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी। That's a wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.